write a pseudocode to accept the 5 numbers and display their product using while loop. Write this question. Write a pseudocode to accept 5 numbers, display their product using while loop. Sir, written. Okay. Then write a pseudocode to print all the leap year between the range 2000 to 3000. Sir, written. सर ठीक है सर ठीक है सर सर नेक्स्ट Okay. Next comes to the modular approach. So while creating a lengthy program that contain multiple functionality and repetitive statement. Okay. So while creating a lengthy program that contain multiple functionality and repetitive statement, you can divide this program into the module where each module perform its task separately. Dividing a program into modules make it easy to understand and debug. The purpose to call each module whenever any functionality is associated with it with the same needs to be performed. So it's saying that while creating a lengthy program that contain multiple functionality and repetitive statement. Okay. Then it is not possible for one person to do all the work at a time. माने जेतेबेले आमे देखिबा आमे गोटे बैंक रे गोटे सॉफ्टवेयर बनेबा से बैंक रे गोटे क्रेडिट कार्ड अछि गोटे डेबिट कार्ड अछि so it is not possible for one programmer गोटे प्रोग्रामर गोटे बैंक रो सबु पोर्टल ताको डेवलप करि परिबने कि डिजाइनिंग रे एक्सपर्ट अछि कि कोडिंग लिखिबार एक्सपर्ट अछि कि डेटाबेस बनेबार एक्सपर्ट अछि so every person work is different so when you are writing the net ta ko टिके दिला so basically this is used modular programming is used to break the program into the smaller part. As I told, it is not possible for a single person. They have to develop the entire application of a bank. गोटे लोक बैंक रो सब पूरा पोर्टल एप्लिकेशन ता बनै परिबो नै तो सेति पय कोन हबो से केवल यूज करिवो कोन ना हमर जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम अछि आमे ताको स्मॉलर पार्ट रे आमे डिवाइड करिवो
आ समस्त को जार जो पोर्टाल अच्छी इंडिविजुअली आम सेंड कर तो दैट्स व्हाई व्हाट हैपेन आम इजीली गोटे प्रोग्राम टाको आम डेवलप कर परिबे so the block in which while dividing a complex program it देखो the dividing program into modules makes it is easy to understand and debug. The purpose is to call each module whenever any functionality is associated with the same needs to be performed. Structure programming technique provide a way to break a long and continuous program into a series of individual modules. So you have to break the program into the individual modules and that can be related to each other in a specified manner. Modules can be integrated through a main program. It forms the main program and you can call each module. आमे मॉड्यूल गोटे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को छोटो छोटो पार्ट रे कन्वर्ट करिवा तापर आमे देखो मेन मॉड्यूल रे कॉल करिवा अब देखो इट इज माय मेन प्रोग्राम and my complex program is divided into a smaller part module 1 module 2 and module 3 तो तीनटा मॉड्यूल कोडी कॉल हला ना मेन प्रोग्राम रे कॉल हला so it act as a building block of a program okay so while dividing a complex program into a module you declare the variable within the begin and end block we know that the variable is used to store the value or variable is a memory location where you have to store a value so while dividing a complex program into module we declare the variable within the begin and end block of the main program the block in which variables are declared is called as the scope of the variable variable can also declare outside of the begin and block आमे जो वेरिएबल टा डिफाइन करिवा सेरा बिगिन आउ एंड ब्लॉक भीतर डिफाइन करि परिबा आउ किछि वेरिएबल अछि जोरा बिगिन आउ एंड ब्लॉक बाहर डिफाइन करिवा ए जो डिफाइन करिवार प्रोसेस को नै कि आमे आको कहिबा जो स्कोप ऑफ द वेरिएबल so depending upon on the place where the variable are declared the variable have the following type of scope the variable kon scope अछि one is global scope another is local scope so variable is having two scope one is global scope another is local scope the variable that can be used anywhere in the pseudocode have the global scope okay आमे जदि वेरिएबल टा डिक्लेयर करिबा सब जगह तक एक्सेस करि परिबा ता को जो ग्लोबल स्कोप global variable are declared outside a module or the begin and end block of the main program now check यार पीडीएफ सर आपण यार पीडीएफ टा सेव होय तो ना हम लिखि देबे पूरा नहीं पठे दे हां जस्ट so variable एडी देखो आमे कोन करले एटा हो जे हमर मेन प्रोग्राम एटा हो जे मॉड्यूल प्रोग्राम मॉड्यूल रे केंदे डिफाइन करा होची ना मॉड्यूल गोटे डिफाइन करा हला sum is equals to num1 plus num2 sum रे आमे लिखिले num1 plus num2 तापरे सेड मागला डिस्प्ले एंटर द फर्स्ट नंबर हमें नंबर टा को एक्सेप्ट करले डिस्प्ले एंटर सेकंड नंबर अगेन आ गोटे नंबर देले एक्सेप्ट नंबर देन कॉल द मॉड्यूल्स एठी हमें मॉड्यूल्स को कॉल करले मॉड्यूल नाटा कोन ना मॉड्यूल नाटा होची मॉड्यूल सम तो एटा होची हमर मेन प्रोग्राम एटा सेपरेटली आउ जने लोक कला किंतु कोठी कॉल हबो मेन प्रोग्राम रे सब कॉल हबो तदी मेन प्रोग्राम रे लिखा हला मॉड्यूल सम
The variable that are declared inside the begin and end block of a main program, function or procedure have the local scope. Okay, so variable that are declared inside the begin and end block of a main program, function or procedure have the local scope and are called as the local and internal variable. Local variable are created when the statement which is declaring the internal variable in the begin and end block is executed. Local variable are created when the statement which is declare the internal variable begin and end block, it go out of scope when the control transfer to the statement outside of the begin and end block. Okay, so variable that are declared inside the begin and end block is called as the main program, function or procedure. Local variable are created when the program which is declared the internal variable in the begin and end block are executed. Local variable माने कौन जो variable टाको आमे begin आउ end block भितरे define करिवा ताको कुहा जिवो local variable. It go out of scope when control transfer to the statement it is outside of the begin and end block. माने begin आउ end block बाहर जो आमे से variable टाको access करिवा ताले हबन. जो variable टा begin आउ end block भितरे define हबो से वेरिएबल टा बिगिन आउ एंड ब्लॉक भीतर ही यूज करी हबो. So this module can be of two type. So module is two type. One is procedure or another is function. The module is of two type. One is procedure, another is function. Procedure is what? Now it is a set of statements that perform the specific task. Procedure कौन करिवो? Now it is a combination of statements which is used to do a specific work. Like in your mobile, you are using Bluetooth, Wi-Fi option. So every option is used for unique purpose. The functionality of the procedure is termed as call return mechanism. When हमें function टाको call करिवा से हमको return करिवा गोटे result. This functionality is called as a call return mechanism. First, a procedure is called. The set of statements stored in the procedure are executed. Then the control is returned to the calling code. So how you have to define a procedure? For defining a procedure, we have to define procedure name. Procedure name, procedure test procedure. The procedure needs to be declared and defined before they can use. Procedure is defined when the procedure is expressed in its body. The procedure basically it use करा जीवो कौन? हम program complex program टाको smaller part रे divide करियो. Then procedure define कर साला परे तापर हमें procedure को call करिवा. Call करिया पे हमें use करिवा call procedure name. तबे गोटे simple example हमें देखिवा.
फास्ट मो प्रोसीजर डिफाइन करिया को हेले प्रोसीजर नेम सपोज hard data okay ये प्रोसीजर रे कोन आसीबो सपोज मु लिखे शो डाटा begin देन एटा कोठी कॉल हबो एटा मेन प्रोग्राम रे कॉल हबो ये मेन प्रोग्राम एंड प्रोसीजर को कॉल करिया पहले एठी कॉल शो डाटा तो ये हमको कौन डिस्प्ले करियो फास्ट हमको डिस्प्ले करियो मेन प्रोग्राम तापर हम एठी प्रोसीजर को कॉल करले कॉल प्रोसीजर करले ये प्रोसीजर रे हमको देखियो दिस इज ए प्रोसीजर हला एटा लिखो तो कॉलिंग ए प्रोसीजर सर ये मझिरे कोन दी स्पेस रे हो नहीं टिके स्पेस रखियो मु खाली तुम जानिया पे लिख देबी अल्प स्पेस रहे से कोन में स्पेस रे हो एटा होची मेन प्रोग्राम एटा होची प्रोसीजर एटा गोटे पार्ट एटा के माने बेटर रीडेबिलिटी पे हम एटा यूज करू लिखिलो आगे से the process of calling procedure is also called as invoking a procedure the process of calling procedure is called as the invoking a procedure and for
calling a procedure we are using call, हमें call बोले यूज करूँ एटा एग्जांपल अछि consider an example where you need to create a procedure that accept the test score of 3 subject for 10 student. Okay, so 10 student ra 3 subject mark hame store kariba and display the individual averages. So first of all हमें एठी define करिबा that student name को स्टूडेंट रा हमें स्कोर रखिबा स्कोर ऑफ टेस्ट 1 ना स्कोर केते अछि देखिबा स्कोर ऑफ टेस्ट 2 स्कोर ऑफ टेस्ट 3 देन एवरेज टेस्ट स्कोर तो नॉर्मली तुम जानिछ जो स्कोर ता स्टोर करिबा करे ताको न्यूमेरिक डिफाइन करा हला और स्टूडेंट नेम नॉर्मली लइला तापर टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 टा रहला अच्छा ये जो क्वेश्चन टा ए क्वेश्चन लेखा तापर हम फ्लो चार्ट रे देखिबे एटा केमते हो आगे से Sir, your voice is breaking. then now I show this one by using a flow chart. So in the flow chart, how it works. First of all, the question is saying that you have to store the 10 student 3 subject score and display it.
display its average. Start. Here we define a counter. Counter is 1. 1 is less than 10. S. So it call the accept. This one. So when it call the accept, so again this flowchart is working. Accept the student name, test 1, test 2, and test 3. So after accept, it return to where? It return to the main program. Then again it call to the average. So average is what? Now test 1 plus test 2, test 3 divided by 3. After find out the average, again it is written to here. Display average. Then counter is increment to 1 to 2. Then it will accept the second student mark. So here in the similar way, it will accept the 10 student 3 subject mark and display its average. Okay, so draw it. सर ये जो माने accept पर एमती दिला गारो कर देछिन से बॉक्स भीतर दिला गारो सब देछिन रूटीन को जे ऊपर हम प्रोग्राम टाको ब्रेक करिवा मॉड्यूल्स रे ओके सर जो सब रूटीन हम ସେମାନେ କାମଟା କଣ କହିଲେ कोन ସେମାନେ କଣ ମାନେ କରିବ କଣ ଏଟା ୟୁଜ कले कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को छोटो पार्ट रे कन्वर्ट करियो माने एटा होची गोटे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को तीनटा पार्ट रे कन्वर्ट कर देला एटा ला मेन प्रोग्राम ए प्रोग्राम टा ए फ्लो चार्ट टा कोन करियो एक्सेप्ट करियो ए प्रोग्राम टा एवरेज बार करियो ओके हम का तुले कंप्लीट नाइस
सरला सर टिके ओके ओके सर ହେଇଗଲା same thing we perform it in the pseudo code. Okay, so this one I will show in the next class. এটা mo next class রে দেখেইবি এটা কেমতি pseudo code রে কেমতি convert হবো না pseudo code রে convert হবো এটা সরলে আমার function টা মু বতেইবি ওকে ଓକେ ସାର୍ ঠিক আছে কালি 6টা রে ফ্রি আছে না কেতেବେଳେ শুভশ্ରୀ କାଲି ମୁଁ 6ଟା ବେଳେ ଫ୍ରି ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖିବି କାଲି ମୋ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟୁସନଟା ସରିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି আচ্ছা মানে ক্লাস কেତେବେଳେ স্টার্ট হবো টিউশন କ୍ଲାସ୍ 4ରୁ କି 4ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ আচ্ছা ହଉ ଠିକ ଅଛି 6:30ରେ କି 6ରେ ସରିବ ମୁଁ ଦେଖିବି ଓକେ ମତେ ଇନଫର୍ମ କରିବେ ଓକେ ସାର୍ ସାର୍ ତାହେଲେ କାଲି ମୁଁ କେତେବେଳେ ଯିବି ମୁଁ କହିବି ମେସେଜ କରିବି ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ବାଏ ସାର୍ ହୁଁ